यहाँ पे है शायर दिल्ली का लड़का पर पीता मैं बॉम्बे से एनर्जी नहीं होती कभी भी लो bitch I'm always on fire किसी को शक है तो आके मिलो लौंडे यहाँ पे है शायर दिल्ली का लड़का पर पीता मैं बॉम्बे से एनर्जी नहीं होती कभी भी लो bitch I'm always on fire किसी को शक है तो आके मिलो लौंडे यहाँ पे है शायर दिल्ली का लड़का पर पीता मैं बॉम्बे से एनर्जी नहीं होती कभी भी लो bitch I'm always on fire किसी को शक है तो आके मिलो लौंडे यहाँ पे है शायर दिल्ली का लड़का पर पीता मैं बॉम्बे से एनर्जी नहीं होती कभी भी लो bitch I was on fire below Hello, 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 hello. What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? Hi guys. एक second now. Let me just announce that we're streaming. Shit. What's up, guys? एक second now. I'll just like post this on Instagram. On Instagram.
हाँ yo, what's up, what's up, what's up? Shit, एक second. Crazy. Hello, hi guys, hello, how's it going? कैसे हो सब लोग? क्या चल रहा है? सब ठीक? सब बढ़िया? सब मजा में? um, एक सेकेंड यार, बाप रे बाप. क्रेजी. यो ओके. हाँ, हेलो. प्रशांत, डिस्कॉर्ड का लिंक डाल देगा उस पे, चैट पे. हाँ, डिस्कॉर्ड का लिंक डाल दे उस पे. वो क्या कहते हैं अपना यूट्यूब वाले चैट पे. आई जस्ट पेस्ट द लिंक देन एंड देयर. क्रेजी. आउटरो काफ़ी भरा भरा दिख रहा है. हाँ ब्रो, आउटरो है, भरा भरा ही है. काफ़ी कुछ है ऑनेस्टली, लाइक दैट्स लेयर्स ऑफ शिट. नॉट टू मच ऑनेस्टली. ये तो वोकल ट्रैक ही है. Honestly, this is a very short. This is such a short. It's going to be such a short video. There's not a lot to it. We'll just wait for 5 more minutes for people to come, and then we'll start working on it ASAP. There's just a lot of layers of pianos and like strings and whatever. Otherwise, it's just literally the first half is only vocals and piano. यहाँ से build up and all. I honestly wanted to do a lot more. I wanted to make a piano ballet into this song. मेरे को बहुत ज़्यादा कुछ करना था इस गाने पे. आप जो लोग डिस्कॉर्ड पे देख के ज्वाइन द स्ट्रीम ऑन द साइड यूट्यूब पे. एंड आई डोंट थिंक मैं जो के और उमेर अब किसी बीट पे आ सकते हैं एक साथ ब्रो. एंड आई डोंट थिंक वो होने वाला है. यो सरकास्टिक मॉन्क कैसा है ब्रो, कैसा है रे? मैं उठ गया था 1. कल मैं रात को बहुत लेट सोया था एक्चुअली. आई वाज वर्किंग ऑन समथिंग, सो आई वोक अप एट अराउंड 1 o'clock टुडे. आई यूजुअली डोंट वेक अप दिस लेट बट आई गॉट रियली लेट. ये कितना टाइम लगा था मेरे को ब्रो. बीट्स बनाने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है. मेरे को आधे घंटे ज़्यादा नहीं लगता है किसी प्रोडक्शन पे काम करने से.
भाई भाई गाँव चल रहे हैं क्रेजी. आपका यूजुअली वर्किंग आवर्स कितना होता है? मेरा यूजुअली वर्किंग आवर्स इज़ मतलब I work bro almost every day, the whole day only. Sometimes I don't work at all also. You know, like it doesn't. I don't know if I think too much about it. Let me just say, okay, cool. I just wanted to check if the audio is working. The audio is coming. कौन सी डेट में बनाई थी ये बीट? ये सब तो काफ़ी पहले बना दिया था ब्रो. मैंने ऑनेस्टली ये बीट कृष्णा एंड आई usually don't work on a very like we work on like idea to idea basis. I remember speaking to him about this idea. मैंने बात करी थी 21 Savage वाले टाइम पे. तब मैं आया हुआ था and I was one of the guest performers at that time. तो कृष्णा भाई भी आए हुए थे और मैं लाइक हम दोनों मस्ती वस्ती कर रहे थे. तो उनने बोला भाई मैंने ना कुछ लाइनें लिखी हैं और कुछ चीज़ें लिखी हैं एंड आई वांट टू मेक समथिंग कूल. आई लाइक श्योर. एंड हमने कहा कुछ फिर पियानो देन आई थिंक ही सेड कि पियानो बैले में कुछ करना है. एंड आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज मेरे को पियानो बैलेज पसंद है. मेरे को पियानो बैलेज बहुत पसंद है. मेरे को पियानो पे गाना बनाना बहुत अच्छा लगता है. एंड ऑनेस्टली it's pretty cool to do that. तो मैं गया 3 हफ्ते बाद उनके घर पे. I was with him only and that time we just wanted to create like a good instrumental. The purpose was that we wanted to create a really good instrumental जो कि अच्छे से emotions को capture करे, because the idea was to write on for himself. The idea was to write a letter for himself. So piano ballet is the best thing at that time, like there's nothing better than a piano ballet. It really gives out emotions in its truest form. तो हम लोगों ने स्टार्ट किया. हम लोगों ने लाइक सबसे पहले ये बजाया which is Rhodes chords. You can see the chords right here. And एक लेफ्ट पे बज रहा है, एक राइट बज रहा है. एंड एक आपका बजेगा आपके लेफ्ट पे इधर. एंड so this is the bedrock of the song. And then we went through I remember going through some vocal patches on Splice. So I found this. So I played those with those chords only, and जब ये chords का बजाया तो it became really nice. Like अभी ऐसे है, but the moment I add this, just sounds a lot better. And then I was like, maybe I need another layer of like choir or something. And I love choirs, I love vocals and all overall. So then
we had this main choir, which is what you hear in the start. ये actually ऐसा नहीं था. So when I took the let me see if I have a backup for this. But this choir wasn't actually like this. मैंने इसको transpose करके I made it like that. I actually might not. But let's see. 16th. Let me just open up this project file and see. Yeah. हाँ तब ये हो गया था. So basically like Melodyne में एक आप polyphonic so आप polyphonic तरीके से उसको कर सकते हो. And what that helps you to do is नहीं मेरे को ये चाहिए. So polyphony, what is polyphony? So there's monophonic and polyphonic. Monophonic मतलब simple एक and polyphony मतलब multiple. So for example अगर मैं Melodyne लेता हूँ यहाँ पे, okay, इधर नहीं एक ऑडियो फाइल पे लेता हूँ, सॉरी. हाँ, और ये मैं वोकल्स इधर डालता हूँ, ये Melodyne इधर डाल दिया. And if I had to transfer, so for example this, so you see all of these are so if I do this for example, see that changes stuff. So for example, so that makes it really interesting. So you can play with notes like these. So the original choir wasn't like this. So I had to bring it down into the scale, and that is very important. Form and shift nahi bhai. Form and shift is a different thing. Form and shift na got it. Nahi bro Ajinkya, don't jump the gun. Form and shift is not this. This is not form and shift. Nahi main neend mein nahi hu bro. I'm just like very calm. Today I had a very good sleep. I'm very calm. Form and shift is not the same as changing the pitch. Pitch changing and form and shifts are very different things. So this happened and and then another piano of course on top of it, because this was so dark and dry. So I needed something on the top, so I added, so this just adds like a good, see, without or with, this adds a good top end to your ears. And that is what it literally was for. A GW piano centric, which is, ये सब important नहीं है, मतलब honestly जो plugins मैं use कर रहा हूँ important नहीं है. What is important is the decisions of the instrumentation and the layering made, and why each of them were done in a certain specific way. This was done so that I can add top end. This was for bed. ये bed है बहुत strong mid frequencies का, and then choirs. So this was the song. To be very honest, this is the whole song. That's it. इसके ऊपर फिर अब मैं आपको 4 मिनट का ये दूंगा तो आप सुनोगे नहीं, तो इसीलिए we had to keep adding stuff, right? And of course
So this became the chorus. See, everything is, so the pianos are in the center first, and now it will open up where roads go left and right. So everything is widened, so everything is bigger, and then the verse. Dear prospect, I hope this letter finds you well. कैसे हैं घर पे सब और कैसे हैं तेरे friends? I know you're feeling grown तो हुआ अभी 18. There's a little bit of tape noise right here, which is so low. Oh my god, that's hardly there, but it's there. I know you're feeling grown तो हुआ अभी 18. Then it's same. Then again, then I added texture. Textures you can add by simply doing this, yeah. Ye lo. So ऐसे करके तुम you can add like fucking weird ass textures. See, so much. And then if I like add ARP to this, so if I do, for example, if I do melodic, समझ लो, and then if I add like a layer of this and remove the arpeggiator and add another preset, for example, so on go to so I mean you can just do stuff like this and create weird textures that you can put in your songs. That's the idea of a texture. Textures are mainly to just give feel to the song, to make like things a little more interesting rather than just like chords and everything, you know. So and then what else? So the texture, without the texture then the chorus otherwise sounds the same, but movement. And then the bass. Bass is like a one shot over here. And then just like shape a box to just give it that volume automation to make it moving. What is this? Augmented strings. Augmented brass. See, this is so beautiful, the way it moves. So it keeps moving, right? And then you have this filtered out so that it can be there subtle. Everything is subtle because we wanted to really make the vocals shine, and because he's writing a letter and you want to be able to hear everything that he's saying. Vocal की एक layer है, एक ही layer है bro, मतलब main vocal का एक layer है. That's it, because एक ही vocal है. About managing. So आगे जाके चीजें बदलेंगी.
if I open this up, करेंगे तेरे सपने की इसलिए छोड़ मत तू गाने लिखना so he also wanted everything more subtle in terms of its approach. Krishna Bhai wanted everything more subtle, and so that's something that we had to do, is to like sort of make everything darker in its nature, that is high frequencies काटना, so that vocals पे थोड़ा सा जगह रहे. अदरवाइज दिक्कत बहुत हो जाती है यार, अगर वोकल्स के लिए जगह नहीं है, एंड इन अ सॉन्ग स्पेशली विच इज़ लाइक अ स्पोकन वर्ड, अगर उसमें आपको वोकल्स समझ नहीं आ रहे तो कोई पॉइंट नहीं है. सो दैट्स समथिंग दैट वी हैड टू रियली रियली फोकस ऑन. एंड देन moves into this. And then there's this. Yeah, I played it with hands only. I was like trung 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 trung. Gives you a good feel. This is just a drum loop, nothing much, honestly. Which is with a drum bus. Without the drum bus, and with the drum bus, it just gives you a little more drive and everything, a little bit of saturation, a little bit of compression, makes the drums even more darker. Then there's this. This is a sliding synth that I wanted to make. Gives you a very different feel, yeah. Oh, I could have done something more interesting with this, to be very honest. Maybe. I mean, let's just try. Yeah, that sounds so much better. Yeah, that sounds much better, honestly. But too much reverb also, so whatever. Oh, if you're getting harsh effect everything right now, that's because of the mic leakage. Yeah. That's only because of the mic. I'll just have to wear my headphones, which I don't want to honestly wear. But wait, I'll fix it for you. Because when I do this, yeah. So the mic is the issue over here. So that's the problem. So I'll just do one thing. I'll wear my headphones. And mute it from here. Perfect. अब आपको सब कुछ अलग अलग सुनाई देगा. You will hear everything अलग अलग, which is good. Okay. So this and what else? We added like a lot of like orchestral layers. Movement is like building up a sound is very important. And then this. So I rendered a lot of the things into audio, and some I used in some places I used samples, like this is a sample. Right, this is a sample, and this is a sample,
and this, and all of this was textures or sample. Guitar slides, so I just picked up guitars and used textures. Then so there are samples here and there. Yo, if there's somebody on Discord, can you please go on mute? So sounds so pretty. All of this. All of these slides are made with like delay and reverb and stuff like that. So you can really use that and create something cool. Vocal processing, vocals मैंने process करे ही नहीं है bro. Vocal processing मतलब मैंने mix master तो करा नहीं है गाना. So I don't have a vocal processing over here. आज और बोलूं बुझने मत दे तू ये हल्की मिट्टियां. I know you're feeling like तू बस कैसे मिलेगी मत. I know you're feeling grown तू हुआ अभी 18. So there's not a lot to this, honestly. There's not at all a lot to this. If I remove this and make the bass so pretty. The idea was to just make the song prettier and not make it too happy also, because गाना बहुत happy भी हो जाता है कभी-कभार ऐसी चीज़ों पे. Like ये. This could make the song a little more happier also, so that was not the point. And reverse also right here. No, of yours truly. It's $sign. Forever yours. I can show you the effects on different places. ये piano V3 करके एक वो है, which is what I've used as a plugin with GW piano from Waves, and then EQ में मैंने ये डाला है ताकि मैं low end हटा दूँ सारा. Hardly any difference. Rhodes, what has been used? Nothing. Oh, okay, yeah. इसमें क्या Pro MB, so that low end control drivers and a little bit of low cut. That's it. Drums, just the loop. Nothing else except for like a drum bus. Without the drum bus. Addictive keys I don't have. I don't have addictive keys. I don't use addictive keys. Rhodes मेरे पास analog lab ही was what I used, and wow, crazy. Laptop अटक रहा है क्या? हाँ. Yeah. And then slide synth. ये मैंने सीरम से बनाया था actually. I made this in Serum is what I remember. Or maybe it was analog lab only, and I took a preset, and what I did was here you go. I'll just tell you how to do stuff like this. It's damn easy, honestly. Like, what is happening? Let's break down the fundamentals. Let's understand why the sound sounds the way that it does, right? Sounds like a high pitched lead with pitch bending. That's it. So there's the pitch or bend right here, and for example,
see. So that's pretty much what you do. That's it. And then you add like reverb and blah 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 stuff, and that's it. Automate कर दो उस चीज़ को. How you think of mixing and mastering your beats? How do I think? मतलब it's intuitive bro. I've done it for so many years. मेरे को आदत है अब. मेरे को बहुत आदत है. ये तो आप आराम से कर लोगे यार. एक बार ही आप मतलब किसी क्राफ्ट को इतने साल दोगे, 10 साल दोगे तो आप कर ही लोगे. कॉयर का तो मैंने बताया ही था. ये कॉयर कोई इफेक्ट्स नहीं है इसमें, जैसे हैं वैसे ही हैं. देन ये क्या है? ये तो बेस है. बेस में ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं है. ब्रास इसमें भी कुछ नहीं है. Literally no nothing. The way it is, literally just the way it is. Honestly, this is one of the most easiest songs I've ever composed. मेरे लिए इस गाने को कंपोज करना बहुत आसान था. And इसमें भी कुछ नहीं है. That's it. That's pretty much the song, yeah guys. अगर किसी को अब कोई questions हैं तो पूछ सकते हो. Even on Discord, if there are people who want to ask me something, you can go ahead and do that. There's no preset I used on Krishna's voice. Yeah, Krishna's voice was mixed by the mix engineer, and it was processed there and then sent to me. So I had no role in doing all of this. I did have a role in mixing a lot of the song. In which one? क्या नाम है यार वो जो मैंने बनाया था? भूल जाता हूँ हर बारी गानों का नाम ना, मेरे को याद नहीं रहता है. वेट, ये अपना हाँ स्टे अवे में मैंने बहुत सारा वोकल प्रोसेसिंग और ये सब वो सब करा है. उसका ब्रेकडाउन मैं किसी और दिन दे दूँगा. उसमें देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रोसेसिंग एंड अ लॉट ऑफ वर्क डन. सो राइटिंग प्रोसेस पूरा भाई, राइटिंग प्रोसेस मतलब कृष्णा भाई का राइटिंग प्रोसेस तो मतलब ही हैड ऑलरेडी रिटन अ फ्यू लाइन्स here and there. I think he'd already written a verse and or half the verse, and I had just made the piano loop and the vocals. The selling part of the entire song was this, yeah, this choir. These two layers with the piano. उसके बाद सब कुछ सही हो गया था. मतलब उसके बाद everything was like damn chill. Once we finished like the entirety of this, he just wrote everything and then gave it to me, and then he gave me the vocals and then I built up on it. This half was built up then. It was pretty easy song था यार. Yeah, कि if there's any question on Discord and all, also if there are people on Discord who want to ask any questions, go ahead. If you're here on YouTube chat also, you can ask questions. Now I'm all in for questions. साथ में बैठ के नहीं मैं लिखा. कुछ पूछ रहा था. हाँ बताओ ना. मैं ये पूछ रहा था कि जो ये ग्लाइडिंग टेक्सचर था जो गिटार पे जो एंड में आता है, हाँ तो इसके आप मेरे को प्रोसेसिंग दिखा दोगे आपने किस तरीके या से मेरे प्रोसेस पास किया था? मैंने आई रेंडर्ड दिस इनटू ऑडियो, बट इसका प्रोसेसिंग मैं आपको एक आइडिया देता हूँ. रुक जाओ अभी देता हूँ. ओके, लेट मी टेक दिस ग्लाइड साउंड जो मैंने बना रखा है एक और, है ना, जिसमें कोई इफेक्ट नहीं है.
राइट, इस पे हल्का सा रिवर्ब डाला हमने, ठीक है, और अब हम डालेंगे इस पे एक डिले। बेसिकली ऐसे ही होता है ब्रो, टेक्सचर्स ना ऐसे ही बनते हैं, रिवर्ब और डिले। ओके भाई, मतलब मैं मोस्टली साइमेटिक्स का वो है ना, इल्यूमिनेटिक्स, मैं उसको हाँ इस्तेमाल करता हूँ। तो हाँ, वो ऐसा डीले वीले करके तो सो मैं मोस्टली उस पे करता हूँ। हाँ, सो यू कैन डू एनीथिंग ब्रो, like you can do like weird shit. So stuff like this. I don't know, like there's so much you can do. Then there's this thing called effect track also. There's also like guitar plugins that can help you do this. Like I don't have guitar Rigo here, but I do have neural DSP. So for example, if let me take Tim Henson and let me put it here. And then let me just like go to weird shit. I mean, let's just see. I don't know. न्यूरल तो लाइक ऑल टाइम फेवरेट है मेरा, गिटार प्रोसेस करने में वो तो जैसे सही है। बिल्कुल. So you can just like do stuff bro. I mean, इतना उसमें वो है ही नहीं, जैसे ये भी है, ये नहीं, बस एक्चुअली मेरा क्वेश्चंस एक्सपेरिमेंट्स को लेके इसलिए था सर आपसे, क्योंकि मैं मोस्टली बहुत कुछ ऐसा, जैसे मैं ऐसा चाहता हूँ कि जो अभी तक नहीं सुनते ना लोग, वैसी टाइप की बीट्स बनाना। तो जब मैं उनको बनाना ट्राई करता हूँ तो मोस्टली आउटपुट ऐसा आता है कि लोग बोलते हैं कि भाई ये क्या बना दिया क्या, लेकिन मेरे को फिर ऐसा हाँ लगता है कि एक्सपेरिमेंट करना गलत तो नहीं है, मतलब हाँ, नहीं समझ रहे हैं मैं बिल्कुल क्या कहना नहीं, चाहता मतलब क्या फ़र्क पड़ता है ब्रो, और मतलब ब्रो किसी को कुछ नहीं पता होता ब्रो, दूसरों की बात नहीं सुननी चाहिए गाना बनाते वक्त. हूँ। थैंक्स भाई, अब मतलब अब बहुत सारे लोगों को मैंने कृष्णा को जो मेरा अरीरी एक गाना था मैंने सुनाया था, उनको अच्छा लगा था। बस मेरे को वोकल प्रोसेसिंग सीखनी है, और बाकी बीट्स में तो लाइक आई लाइक एक्सपेरिमेंटिंग। बस कोई दिक्कत ही नहीं है. थैंक यू सर। हाँ ब्रो, ऑफ कोर्स, नो वरीज. ये सब तो आप, ये सारे टेक्सचर्स बन जाते हैं ब्रो, कोई दिक्कत की बात नहीं है. एनी अदर क्वेश्चन? एंड ट्रांजिशन टिप्स दे दो अब. ओ दैट्स अ गुड क्वेश्चन. अरेंजमेंट अप्रोच कैसे करें? भाई वही, मतलब द आइडिया इज टू keep adding and subtracting. This is the final layer of the song, so this is everything together. Also, you will find some really cool like textures and slides on Splice, so I would recommend not to waste your time on stuff like this, and you can genuinely just go to Splice and find everything. I found a lot of textures and Splice on textures for songs on Splice, a lot of them. I mean, this texture right here, this, all of this you can find on Splice. So arrangement bro, ये देख रहा final layer जो है, तो इसको आप, so you have to give a purpose bro. So पहले जैसे ये आता है, and now Krishna's verse is about to start. So what do? You remove all of this. Dear prospect, I hope this letter And you let it will be. be full of life. Let it be. Let it be in the first verse. Don't give them anything. And then when the next time the chorus comes, you add this little texture just for difference. And then now in the second verse, now because second verse can't be the same as this. Dear prospect, Otherwise it's boring bro. अगर मैं तेरे को इतना लंबा 1.5 मिनट का कोरस 2 मिनट के गाने के बाद मैं वापस तेरे को कैसे हैं हाल मेरी यही पिछली दे दूं, तो फिर भाई कोई फायदा नहीं है ना. Then you are also. कैसे हैं हाल मेरी पिछली चिट्ठी भेजे हो गए ऑलमोस्ट 10 साल. It's been a while. Then there's no point. So it's important for you to like do this. Then I add another layer. तू बैठा रहेगा just sad cause last time हमने And आगे then I जाके add चीजें this guitar. बदलेंगी. दिन ये लोग कदर तुझे And then I जाना add this. finally work out. I hope तू ढूंढे ताकत to As it's carry coming on to the this chorus time. again. Signing off yours truly. And then when he says, $sign.
that's pretty much it. And then you come here and then as you can see यहाँ पे एकदम से पूरा गाना वापस खुल जाता है. Like the idea is कि end में गाना पूरा खुल जाए. And then outro वापस चीज़ें कम कर दो. So like the idea is to keep filling stuff up, layers, and then subtracting the layers slowly and steadily depending on what part में आपको क्या चाहिए. गिटार आप ये रहा ना. ये ब्रो मेरे को एक क्वेश्चन था. बताइए. सो वो कोरस जो था ना, मतलब लास्ट में वोकल्स, फीमेल वोकल्स, हाँ. तो वो आपने अपने फ्रेंड से कराया या नहीं स्प्लाइस सैंपल है ऐसे ब्रो. स्प्लाइस से? हाँ हाँ. सो हाउ इज इट सो परफेक्ट? लाइक ऐसे कैसे? पिच में उसमें कुछ रहता है क्या कि? हाँ ब्रो, की तो डाल की तो इम्पोर्टेंट होता ही है. उसके ऊपर से टू मेक इट गो इनटू पिच आई यूज्ड मेलोडाइन टू उसमें मेलोडाइन में पॉलीफोनिक एडिटिंग का ऑप्शन होता है, तो हर एक वोकल का एक लेयर को वो कर देता है. इसमें ऐसे देखो, मैं अभी करके दिखाता हूँ. समझ लो you'll never leave वो करते हैं. चलो ऐसे करते हैं. But is so you see I could change the pitch एकदम से. But the thing is that the only problem is that it will lead to phasing of the vocals. So you must be very careful about it. ऐसे नहीं कि हवा में उठ के बस कर दिया, कुछ भी कहीं तक भी खींच लिया, वो नहीं करना. So try and get like a vocal that is in scale and everything, and then try to just do 19-20. Otherwise just get a friend and make them sing it. That's the easiest thing. Thank you. No worries, bro. And yeah, man, this is pretty much. Bro, do you do things like making beats with your subscribers? No, I don't do that. अभी तक तो नहीं करा है. वो मेलोडी के ऊपर ड्रम्स कैसे चूज करे जो ब्लेंड करे, भाई ये तो मेरे को भी नहीं पता. यार आई थिंक अ लॉट ऑफ द थिंग्स दैट आई नाउ डू इज सो इंटुइटिव कि मेरे को आइडिया नहीं कि चीज़ें करते कैसे हैं. मैं बस सुनता रहता हूँ और करता रहता हूँ जब तक मेरे को वो राइट चीज़ ना मिल जाए जो गाने के साथ जा रही है. वो बहुत इम्पोर्टेंट है. बिकॉज एंड ये तो सिंपल ड्रम बीट है. If I put this. मेरी पिछली चिट्ठी भेजे हो गए ऑलमोस्ट 10 साल. It's been a while. तू होने वाला अब 28. And I know this probably feels like it's the lowest point of your life. So it just goes, right? So it goes. इतना सोचते ही नहीं है भाई. Do I know any artist in the industry who uses Reaper DAW? I don't. I don't. How do I make songs? Especially your projects. Like, how do you think of making bridges, hooks, and how to get clients? I don't know. I don't know how to get clients. Yeah. Was this made without a key? Without a key? How do you make a song without a key? It has to be in key, na? It has to be in a scale तो होना चाहिए गाने का. And यार, he's doing a free verse, so I don't need to wait for his vocals to make a key.
बिकॉज हिज वोकल्स डोंट हैव अ पर्टिकुलर पिच. हाँ जी बोलिए. Like what I meant to ask was, uh, like when do you find the key? Basically, first you do an initial production, then you like it, and then you find the key of that production and set it as the key नो नो, for the song. नहीं भाई. मतलब गाना बनता ही स्केल में है ना. अगर मैं कोई कॉर्ड प्रोग्रेशन बना रहा हूँ तो वो तो ऑलरेडी एक स्केल में और एक की में है ना. Yes. हाँ, तो उसको वो बाद का प्रोसेस तो होता ही नहीं है, वो तो स्टार्टिंग में ही हो जाता है. तो इसमें लाइक जब वोकल्स आते हैं तो आपको चेंजेस करने की कुछ ज़रूरत नहीं होती इन द की. नहीं, बिकॉज इंस्ट्रूमेंटल पहले बन गया था, वोकल्स बाद में रिकॉर्ड हुए थे. एंड ऑल्सो लाइक यार मैं गा थोड़ी ना रहे हैं कृष्णा भाई, जो मेरे को की चेंज करनी पड़ेगी या ये करनी पड़ेगी या उनके वोकल्स कंफर्टेबली नहीं बैठ पाएंगे. तो रैप कर रहे हैं तो ईजी होता है की में बैठना. ओके, थैंक यू. नो वरीज. Anything else, guys? Any question other than this? Because then I'm pretty much done. Like इस गाने में ज़्यादा कुछ था ही नहीं. Honestly, in the Krishna song that in the song that Krishna had made इससे पहले, which is यार एक तो उसका नाम इंग्लिश में है ना, एक तो मुझे इसलिए याद भी नहीं रहते भाई गानों के नाम. मेरे गाने सारे मैं अपने हिंदी में लिखता हूँ. अंग्रेजी में जब लिखते हैं लोग ये अपना स्टे अवे, बिकॉज अच्छा मेरे पास ना तू आ इज़ लाइक स्टे अवे. ओके गॉट इट. हाँ, सो स्टे अवे. या सो स्टे अवे में आपको मतलब उसमें बहुत प्रोसेसिंग है, तो वो सम अदर डे यू नो. ब्रो आई मेक गुड सिंथ वेव. आई मीन्स मेरा उस जॉनर पे अच्छी पकड़ है. दैट्स ग्रेट ब्रो. दैट्स लगे आप प्रार्थना का भी कर दो. प्रार्थना का मेरे पास है ही नहीं ब्रो अब लेयर्स इसमें ना, बिकॉज आई चेंज माई सिस्टम. सो आई डोंट थिंक आई हैव इट. करते हैं, चलो चेक करते हैं. अभी तक पहुंचे नहीं मैं हूँ जहाँ खड़ा. I don't have the. Yep, I don't have the beat. Cow. And this is the initial beat. That's how it was. It wasn't like a very drill sort of like a beat. But I don't have the OG stuff for it for you to play. Sorry. Yeah. Yeah. I don't have it. वही मेरा plugins ही नहीं है. मेरे पास प्लगइन्स ही नहीं है. जो मेरे कॉन्टैक्ट के प्लगइन्स थे जिस पे मैंने मेन बनाया था जो इंडियन सिंथ है, वो सब है ही नहीं अब मेरे पास. सॉरी बॉयज़ एंड गर्ल्स. आज डेली 10 बीट बनाते हो भाई. मैं डेली एक भी बीट नहीं बनाता. 10 तो बहुत दूर की बात है. आई विल डू मोर ब्रेक डाउन सून. यार प्रशांत मेरे को एक बार डिस्कॉर्ड लिंक भेजना है यार इस पे चैट पे. मैं अभी पिन कर देता हूँ उसको यूट्यूब चैट पे इन केस. भाई मैं म्यूज़िक कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से ब्रो. 10 साल से म्यूज़िक कर रहा हूँ मैं.
भैया मैं जब सेंड कर रहा हूँ ना वो लिंक की तरह नहीं जा रहा, वो मैसेज की तरह जा रहा हाँ है। डिस्कॉर्ड का लिंक लिंक की तरह नहीं जा रहा, हाँ नॉर्मल कमेंट की तरह ओ जा वेट आई मेक यू mod on that ना तभी रहा। ओके ओके। हाँ that will help. गाना तो yours truly है ब्रो. Truly yours कैसे होगा? What? मैंने क्या नाम गलत लिख दिया क्या डिस्क्रिप्शन पे लॉल. तभी आई एडिट इट अभी. ध्यान ही नहीं दिया मैंने. आई थिंक आई वाज जस्ट लाइक टू स्लीपी. योर्स ट्रूली. दैट्स व्हाई आई स्लीप वेल भाई. आया क्या प्रशांत तूने मैसेज भेजा क्या? हाँ मैंने भेजा है कहाँ पे कहाँ यूट्यूब है? पे कमेंट। क्या कमेंट है तेरा? क्या नाम क्या है तेरा उसमें? प्रशांत डॉट सीतिया। नहीं आया ब्रो. प्रशांत से हाँ पे यूट्यूब पे नहीं आया. मैं स्ट्रीम पे कमेंट कर रहा हूँ भैया। हाँ स्ट्रीम पे ना चैट पे स्ट्रीम चैट पे. हम्म, नहीं आ रहा पता नहीं क्यों. What? प्रशांत सीतिया डिस्कॉर्ड। नहीं चलो कोई नहीं ठीक है. कोई नहीं आप बाद में देख लेंगे कोई सीन नहीं बट या इन एनी केस दिस इज द सॉन्ग एंड या enjoy yourself man. Have a great time. I'll how to glue kick and to it जिस समय बाद में बताऊंगा किसी और दिन. चलो guys take care. This is the production of like the song and it's pretty easy, not that tough. There's nothing to this song that is tough. It's damn easy, very simple layers, but it's a very impactful song because it's been done very carefully. Of course Krishna Bhai's writing is insane on this song. And I'm glad that him and I could do um, uh, the both of us could work on the title track, and I was also happy not to just make another dum chak chak beats, and we got to make something which is like very meaningful, very deep, and something that resonates with everybody on a very personal level. I was very very happy doing this song with him. I yeah man, stream the song, have a great time listening to it, enjoy yourselves. Bye bye, take care, Bye. bye bye.